The flag rises today, ladies and gentlemen. It symbolizes. जब भी मैं यहाँ बैठा हुआ अपना सर खुजाऊंगा, जो मैं 50 साल एज ए हीरो में all the best, good luck to all of you. Thank you very much. God bless you. Fantastic. Give it up for Anupam Kher, ladies and gentlemen. मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी बहुत सारी आपको ताली मारनी है, उसकी रिहर्सल कराता हूँ. जब भी मैं यहाँ बैठा हुआ अपना सर खुजाऊंगा, इसका मतलब आपको ताली मारनी. रिहर्सल करते हैं. 1 2 3. नहीं मैं सर खुजा रहा हूँ. नहीं तो पता क्या, इतना सर खुजाऊंगा कि मेरे बाल ना निकल आए. थैंक यू. So आप सबको क्यों यहाँ मिल गया है? मैं भी बोलूंगा जोरदार तालियां, पर जब सर ने सर खुजाया तो ताली जरूर बजानी है. जी सर. सर, very greedy. So I cannot miss this opportunity. कंजूस है. मैं greedy हूँ, मैं लालची हूँ. मुझे आपका समय चाहिए. I want your time. How excited are you being here in Goa? You can see the cheers. जी बहुत एक्साइटेड हूँ. तो इसी में पार्टिसिपेट करना, और पार्टिसिपेशन ही नहीं, जो मैं 50 साल एज ए हीरो में मेरा अभी 50 साल पूरा हुआ इंडस्ट्री को आके एज ए हीरो. अभी चलती का नाम गाड़ी है, अब ये तो दाढ़ी भी है इधर, बढ़ती के नाम दाढ़ी. तो कैरेक्टर में एक बार दाढ़ी से दिखता हूँ, एक बार बिना दाढ़ी से दिखता हूँ. और मेरे पहला मेरा पिताजी को मैं याद करना चाहता हूँ. द लेजेंडरी एन टी रामाराव, जो नेशनल फ्रंट के चेयरमैन भी थे बाद में. वो पहले फिल्म एक्टर थे, और मैं भी अभी तीसरा बार जीता हूँ MLA फ्रॉम हिंदूपुर. जो आज सत्य साई जी का 100 ईयर्स का आज राष्ट्रपति जी वहाँ पर है. मेरे जीजा जी जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, वो वहाँ पर सब शामिल है. और भगवान की कृपा से अभी 4 हिट एक के बाद एक दिया मैंने. वो मैंने नहीं, मेरा पूरा टीम ने दिया. पहला था अखंडा, उसके बाद था वीरसिम्हा रेड्डी, उसके बाद था नेलकोंडा भगवंत केसरी, उसके बाद था डाकू महाराज. अभी दिसंबर 5 को आ रहा है अखंडा तांडवम 2. मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ तेलुगु ही नहीं, वो तो अभी सिनेमा तो सिर्फ तेलुगु नहीं, इट इज़ पैन इंडिया. सो विल कॉल इट पैन इंडिया. सो आज पूरे हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर शामिल हूँ. सिर्फ ये लोग ही नहीं जो स्टेज के ऊपर है, लेकिन सामने जो है पिताजी बोलते थे एक मंदिर है और उसमें सब भगवान है, तो मैं उनका सेवक. वैसे ही मैं बहुत खुश हुआ. जी सर, मैं डाकू महाराज का वो दबड़ी दिबड़ी मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर. अभी आप देखेंगे अखंड तांडव. Fantastic. Thank you. Sir, we are very excited and very honored to have you here. And your filmography is really inspiring. Please have your seat and we'll be beginning with the ceremony very shortly. Munmun, क्या status है? We are all about to start. The countdown is almost now coming to an end. We have the Honorable Governor in our midst. We have the Honorable Chief Minister in our midst. We have the Honorable Minister of State for Information and Broadcasting in our midst. So now the countdown is nearly coming to an end. The cultural troops have all lined up. Floats have all lined up. We are all waiting with environmental duties and the start of a fruitful new chapter of IFFI. The newest edition of the film festival is thus beginning on a sustainable note as we invoke the blessings of Mother Nature. Let's all thank Mother Nature in the midst of such a thoughtful gesture. The watering of the plant by dignitaries. Requesting all the dignitaries to please be seated
And ladies and gentlemen, since 1952, IFFI has been enthralling us with its eclectic selection of films, culturally rich and thoughtfully curated by distinguished industry experts. And the government of India has played a key enabling role in it from the start. At the opening ceremony of the 56th International Film Festival of India, IFFI 2025, Honorable Governor of Goa, Sri Kusavati Ashok Gajapati Rajuji, Mrs. Gajapati Rajuji, Minister for the State Information Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Muruganji, Minister for the State Power and Renewable Energy, Sri Sripat Naikji, the Member of Parliament, Sri Sadhana Shet Tanodi, the Member of the Lok Sabha from the Kanpur, Ashwetji, the Secretary of the Information and Broadcasting, Sri Sanjay Jajuji, Anupam Kherji, Manoj Joshiji, rest all the dignitaries on the dais, all the ambassadors reporting from the different countries, the Chief Secretary Dr. Kandavlu, the Festival Director Shekhar Kapoor, Mr. Dago Naik, and creativity. And today, the Goa once again celebrating the cinema, the most powerful storytelling in the world. The friends, peoples often ask why Goa. Let us talk about the why. Gentlemen, N. Balakrishna, Indian actor, producer, filmmaker, and Padma Bhushan awardee, being honored and felicitated for completing 50 glorious years in the cinema industry. Over a career spanning more than 5 decades, he has acted in over 100 films, known for his roles in fiction dramas, mythological films and action movies. Some of his notable films include Gautami Putra Satakarni, his 100th film where he played a historical ruler, as well as Narsimha Naidu, Simha and It's called the Bus of Governor of Goa, Pusapati Ashok Gajapati Raju Garu, and our Minister of State, Information Broadcasting, Thiru Anna Murugan, and rest Mr. And I promise you, we will start with the parade after this. To the distinguished personalities from the entertainment. Bharat Ek Sur, a unified folk symphony. Give it up for Bharat Ek Sur.
एक सुर में एक ताल में बंधा है देश एक राग में। एक सुर में एक ताल में बंधा है देश एक राग में। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बंधा है देश एक साथ में। ये जननी भारत मेरा, ये भारत देश हमारा। अरुणाचल से गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, जननी भारत है हमारा, ये भारत देश हमारा। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। Fantastic! A standing ovation to this stunning and spectacular performance, ladies and gentlemen, and a grand salute to Vande Mataram. The flag of the opening parade. As the flag rises today, ladies and gentlemen, it symbolizes not just commencement of IFFI, but a flag off to the spirit of creativity and cinematic excellence that India proudly shares with the world. What a historic moment, flagging off of the grand IFFI parade that marks the start of the 56th edition of the International Film Festival of India. The world is watching. India is taking pride in its culture, in its cinema, as IFFI kicks off in a very different avatar, a new avatar, unlike what we have seen in the last several decades. Fantastic. Officially begins! Come on, everyone! Let the stories unfold, let dreams take flight, and let the world witness the magic of cinema like never before. And now, while I rush inside for the opening film, over to my friend Munmun. Thank you, Karan. So let's
That's a wrap. मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन सिंह जी ये गर्जना से भस्म हुए दुष्ट सब घर से होगा सर अलग टुकड़े होंगे असरियों के भाई हुए मुखले बेहाई हुए चांद से थमाए धरती गगन नाद से गूंजे दिशाएं पवन चांद से थमाए धरती गगन नाद से गूंजे दिशाएं पवन चांद से धरती मुंडे बाल अल्लाह की शक्ति के साथ भी रोशनी रखते से रखते सदा चक्षुदान अल्लाह के बारे में के अल्लाह की शक्ति के साथ Parade is well and truly on. Leading the way is Goa with its cultural performance and its floats. The floats show its culture as well as its carnival. The Goan folk performance is what we saw. There are more floats coming up. What a celebration of Goan cinema, of Goan culture, all put together. So many facets of Goan on display right in front of our eyes. Goan floats, Goan cultural performances.
they give you a grand opening parade. Please welcome India's most beloved characters, the brave unspoken hero of Vodafone, Korea Bhim, is right beside him with his never human the small hand-spoken Chunki. In Myanmar, they represent the power of Indian storytelling and the imagination that have inspired millions of children across the world. Let's give them a huge round of applause. And now there is Petty. Petty is one of the most anticipated rustic action dramas of the coming year, directed by Ruchi Babu Sana, a filmmaker known for bringing raw emotions, rooted storytelling and intense human drama to the big screen. The film stars global star Ram Charan, and you can see that he is gearing up to be one of the biggest releases of 2026. We are all waiting for Petty's release. We wish the team all the very best for a successful tenure at the box office. को क्या जवाब है तू कर से Other states are to follow. Keep moving forward past the splitting of Goa right in front of our eyes once again. Culture, heritage of Goa right in front of our eyes. Musical instruments that are used for Indian cinema, ladies and gentlemen, to see the kind of musical instruments that are used to produce music in Indian films. Jewel Barbosa from Goa. Presenting very soon मोटू और पतलू, निक का ऑसम डुओ जो पिछले 13 सालों से इंडिया को धमाकेदार एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से एंटरटेन कर रहे हैं। इनकी दोस्ती और नॉन-स्टॉप मस्ती ने बनाया है इन्हें सबकी फेवरेट जोड़ी। मोटू, पतलू and बिट्टू। Let's welcome बिट्टू बहानेबाज from Nick and smart और जवाब। जो हमेशा मुश्किल से बचने के लिए स्मार्ट और फनी एक्सपीरियंस ढूंढ ही लेता है। Fast punch और surprise से स्मार्ट Thund 2 by Vriddhi Cinemas represents the evolving spirit of Telugu cinema. It is rooted and crafted with a grand cinematic vision, reuniting God of Masses Nandamuri Balakrishna. A Thund 2 rolling right in front of our eyes by Nandamuri Balakrishna. Along with song and dance from the first Konkani film that came out in the ghost and horror scenes being depicted in this vlog from Goa.
of our eyes in the IFFI parade. What a concept! Ladies and gentlemen, we are all enjoying Goan culture, aren't we? The folk performances, the dances in Goan films, the depiction of horror films and ghost films. Let's keep moving forward, one float after the other. The IFFI parade carries on. Haryana's culture, art, heritage, cinema being represented in the IFFI parade. Ladies and gentlemen, that's Haryana for you. Non-stop filming Haryana rolling right in front of our eyes. A representation of culture and cinema of the various states of India. There's Goa and now there is Haryana. Ladies and gentlemen, we hope you are enjoying the IFFI parade. Up next is NFDC, 60 years of nurturing Indian cinema, preserving heritage and inspiring the future right in front of your eyes. मसालेदार और मासी फिल्मों के बाद अब बात है कुछ क्लासी देखने की। हम आपके सामने ला रहे हैं NFDC के 50 सालों की गौरव गाथा। ये वह समय है जिसने भारतीय सिनेमा को नई सोच, नई दिशा और नई पहचान दी है। NFDC ने देश के हर भाषा में न्यू एज सिनेमा को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है और आज जब NFDC, NMIC, NHAI, CFI और FD जैसे संस्थानों को अपने साथ जोड़कर एक नया अध्याय शुरू कर रहा है तो ये कहानी और भी खास बन जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को इंस्पिरेशन किया है सत्यजीत मंडलिक जी ने और बहुत ही बढ़िया और दमदार कला और प्रोडक्शन डिजाइन किया है महेंद्र पोद्दार जी ने। चलिए भारतीय सिनेमा की इस खूबसूरत यात्रा के साथ this one has a shooting scene from a Konkani film where you will see how older people used to live in Goa. This is a Goan traditional film. Ladies and gentlemen, Goa is back with us once again.
it right on them. Which is to make an announcement that the opening film of the 56th IFFI, the Blue Trail, has started on the opening day of the 56th IFFI. Those interested can move to Auditorium 1 PVR INOX Multiplex. ये हमारी उद्घाटन फिल्म है The Blue Trail, ये पोर्टुगीज लैंग्वेज में है, ब्राजीलियन डायरेक्टर ने इसे बनाई है। जो भी इसे देखना चाहते हैं वो जा सकते हैं ऑडिटोरियम 1 PVR INOX में। Those enjoying culture can stay here. Those who want to see the movie can move and see the opening film, The Blue Trail. Let's keep moving forward, one float after the other, many more to follow. Let's keep moving forward. Let's show some momentum. Let's move forward. Homble Films right in front of your eyes. The tableau that celebrates a century of the genius Guru Dutt, the filmmaker who became a feeling. Guru Dutt being honored on his 100th birth anniversary. The iconic Guru Dutt, a legend. Welcome to the vibrant world of Odia cinema with its newest presentation, Bindu Sagar. The film is the first Odia film to have a global theatrical release. फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख लेना। अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। With iconic faces that we can all relate with. Now let's remember the Annadata.
Let's give Spain represented in its myriad forms, in the forms of folk dances, in the form of cinema from different corners of the country. This float presents Andhra Pradesh's thriving film industry. More flow colors of India. This one in landscapes, the greenery, the vibrant tourism. It's a popular destination for visitors.